Hello everyone, good morning all of you. So we are starting with the analysis video for 11th of November. So firstly, we see governors, they cannot sit on the bills passed by the houses. This has been highlighted by the Supreme Court. इसको हम डिटेल में आर्टिकल 200 द कॉन्स्टिट्यूशन ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. So we have talked about कि solution क्या होगा. So solution should be एक proper time frame होना चाहिए. So Supreme Court का क्या कहना है? तो bench has said कि the governor as an appointee of the president is a titular head of the state. So governors they cannot sit on the bills जो भी state assembly pass करती हैं. Claiming that the House passed them in an invalid session convened after adjourning sine die without prorogation. तो ये reason है from the governor's side. So this has been rejected by the Supreme Court, and Speaker is within the jurisdiction in adjourning the House signed in. So this is again power in the hands of the Speaker of the House. And any attempt to cast doubt on the session of the legislature that is fraught with grave perils to democracy. मतलब proper जो हमारा constitutional democratic system है उसके लिए it is a threat. मतलब you are like these are claims. ऐसा कोई substantial proof या वो कुछ नहीं है. These are just merely claims, and claims के basis पे governors they cannot sit on these bills indefinitely. So this was the final thing around this particular issue by the Supreme Court. So the real power rests with the elected representatives of the people in a parliamentary democracy. And the bench said that as it settled the law in a writ petition filed by the Punjab government against the governor. So multiple states may we are seeing this issue between the chief minister and the governor of a state, which includes even Kerala and Tamil Nadu also, and Maharashtra maybe there is there, and Punjab is also there. So इस पे I don't think so और कुछ डिस्कस करना है तो आप लोग बोल सकते हो. No, Mansi, we can move. हाँ, यहाँ पे mentioned है governor acts on the aid and advice of the council of ministers save in the areas जहाँ पे constitution governor को discretionary power देता है. So that's there. Then during talks with US, India bats for two-state solution to end this Israel-Palestine crisis. So हमारा stand यही रहा है as far as Hamas is concerned. So obviously India is not supporting terrorism in any form anywhere in the world. And Israel-Palestine जो conflict है, we support this two-state solution. So even USA, these were talks between India and US. So obviously USA also agrees to this thing, but ground realities is like different right now. So what are the strategic issues between India and US? अगर आप इस पे कुछ बोलो, like what are 2 to 3 strategic issues in agreement on the strategic issues between India and US during this bilateral meet? So आप लोग like spot कर सकते हो पहले. So, Mansi, I think there are 3 prominent areas between the India and US which are currently going on. Number 1 is the defense and military operations arrangement. अगर हम बात करते हैं UAV की, ICHAT की, तो ये कुछ इशू है जहाँ पर कोऑपरेशन हो रहा है. दूसरा स्पेस टेक्नोलॉजी में जो चिनूक और इस तरीके के हेलीकॉप्टर्स हैं उसमें स्ट्रेटेजिक टाइज है. दूसरा लीमोआ है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम करके, ताकि जो दोनों कंट्रीज हैं वो आपस में लॉजिस्टिक एक्सचेंज कर सकती हैं. और इसके अलावा जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वहां पर भी नेवल का बोथ साइड्स जो युद्ध अभ्यास होते हैं तो वो कुछ स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं. और बाकी जो फिर 2+2 समिट चल रही है वो भी एक अलग सबसे बड़ा जो इशू है दैट इज इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की जो ग्रोइंग असर्टिवनेस है. सो उसको काउंटर करने के लिए भी वी आर लाइक हैविंग एग्रीमेंट्स ऑन दीज इश्यूज, क्योंकि वो आपने जैसे बोला मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर लाइक एज अ थ्रेट एक्ट कर रहा है. So celebrating festivals in a sustainable manner, we have talked about like we'll be celebrating Diwali tomorrow. So herein a lightning of 21 lakh earthen lamps on the Ram ki Paddy. So this would be there, and lighting of additional 7 lakh earthen lamps in Ayodhya city. So this will be organized and held tomorrow. So यहाँ पे basically sustainable manner में we're talking about conscious
celebration of the festival. So यहाँ पे earthen lamps है. So we have talked about कि जो material use होना चाहिए for making these diyas, that shouldn't be plaster of Paris. वो मिट्टी के जो दिए होते हैं, they are again like environmentally that is safe. So that can be the thing. So because of rain in Delhi NCR region, odd even scheme has been deferred for the time being. And we were also talking about कि क्या artificial rain कराई जानी चाहिए नहीं. So we like have the natural rain and उसकी वजह से we are having the relief. And apart from this, we see WHO के जो standards हैं, that is also important for us to know. So the concentration of the poisonous pollutant PM 2.5 in the city, it was recorded at over 20 times जो limit prescribed है by the WHO. So when we talk about internal security, so NIA has filed charge sheet against 5 alleged Al-Qaeda operators. So this is one of the terrorist organizations and was the terrorist outfit Al-Qaeda and conspiring to carry out terror activities in India. So institutional level pe when we talk about, so the National Investigation Agency is there to specifically look into these cases related to this, and acts talked about Unlawful Activities Prevention Act, Indian Penal Code, different sections are there. So definitely these bodies, when we talk about terrorist organizations, so there exists the transnational link as well. So conspiracy, they had planned a conspiracy orchestrated by Al-Qaeda operatives based across Indo-Bangladesh border in collaboration with the arrested individuals aimed at carrying out terrorist acts and activities in India. And then different states, they also form these anti-terrorist squads at the state level. And at the same time, this National Security Act, this is also to maintain law and order in the country. So this is also important for internal security. So यहाँ पे recent जो case हुआ, attack on the migrants. So migrants की safety definitely एक important aspect है when we see migrants specifically moving from states like Bihar, Jharkhand, they're moving towards Gujarat, Maharashtra, and even Tamil Nadu, maybe we see huge migration towards that state. So migrant safety एक important issue हो जाता है. High Court set aside the detention order against, which was passed against a YouTuber from Bihar under the NSA. So he was accused of spreading fake videos on social media about the migrants from Bihar being attacked in Tamil Nadu. So this advertisement, it is speaking stop violence against the women. So when we have talk about legislative क्या हमने provisions या acts pass किए, so this is the POSH Act 2013 में इसको pass किया गया था. इसके अगर हम provisions की बात करें तो we are seeing कि implementation में there are problems. So every employer shall provide safe working environment for the women at their workplace. Second provision is every employer written order होना चाहिए that shall constitute internal complaints committee बनाना important है under the provisions of this act, जिसमें officers private sector और government department या autonomous body या commission boards के basically they would be members. Basically sorry मतलब private. हाँ जी. I have a question that let's assume there is a sexual harassment with a male in the office place. Do we have any law for that? Do we have any law for that? Law or any provisions for that? ये जो act है, we always say कि it should be gender neutral.
ओके So this is obviously specifically एक्ट इसके बी में नेम भी में आ ही है सकता कि है ये वाला harassment of केस। women. क्या कह रहे हो आचल? आई एम सेइंग दैट कि पोस्को एक्ट में भी इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस मतलब हम ले सकते हैं हाँ, वो चाइल्ड कि सिर्फ स्पेसिफिक हो गया। फिर चाइल्ड है ना? स्पेसिफिक हो गया. So provisions, you can just go through this provision number 3 and 4. बाकी तो like this is factual thing. And we are also having like she box भी है जो एक तरीके से complaint box है. Ultimately जो members हैं committee के they need to work in an unbiased manner. So that is very important. And plus we have seen कि यहाँ पे clearly mentioned है private sector, government departments, autonomous bodies भी जो हैं, commissions board जो हैं, सबको it is mandatory for them to form this internal complaints committee. So दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि कमिटीज ही नहीं बनाई गई हैं. जब हमने देखा अभी जो रेसलर्स का जो केस हुआ था उसके बाद दिस थिंग केम टू द लाइमलाइट. Okay. So Oshik, it is written that Sanjay Singh judicial custody extended. Can you please explain what is the thin line of difference between judicial custody and police custody? Oshik, Mansi, if you can explain. Okay. We're talking about difference between judicial custody and the police custody. So before the judicial custody, we have the police custody. मतलब पुलिस की जब आप बोलते देख रेख में होते हो, जो लाइक पुलिस स्टेशन के, जो पुलिस स्टेशन बेसिकली सेल बने होते हैं, अगर आप वहां पे हो तो दैट इज कॉल्ड पुलिस कस्टडी. वंस यू नो केस बिकम सब्जुडाइज एंड यू आर प्रेजेंटेड बिफोर द जजेस एंड पूरा केस चलता है, देन जो जुडिशरी का डिसीजन रहता है, आपको प्रॉपर जो सेपरेट प्रिजन्स बनाए गए लाइक तिहाड़ जेल और वो सब है, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल कस्टडी. सो जो फाइनल No, Mansi. ऑर्डर रहता है दैट इज Actually, फ्रॉम. actually the thing is, yeah, let me explain. The thing is, जो आपने बात बोला कि जब तक एफआईआर और पूरा प्रोसिक्यूशन प्रोसेस शुरू नहीं होता, जब तक वो पुलिस स्टेशन के सेल के अंदर रहते, तो उसको जुडिशियल, उसको पुलिस कस्टडी बोलते हैं. सो बट एक्चुअली दैट इज नॉट, क्योंकि उसको आप पुलिस कस्टडी तब बोलते हैं जब वो बहुत लंबे टाइम के लिए होती है. वो बेसिकली इतने ही टाइम के लिए होती है जब तक आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता. सो आई एम टेलिंग पुलिस कस्टडी बिगिंस व्हेन अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट अ सस्पेक्ट अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट और एफआईआर. यानी किसी ने कंप्लेंट की है, एफआईआर की है, तो पुलिस कस्टडी चालू होती है. पुलिस कस्टडी का जो टाइम पीरियड होता है वो 15 दिन होता है, और जुडिशियल कस्टडी का टाइम पीरियड होता है 90 डेज. मतलब 90 दिन से 10 साल तक भी हो सकता है जुडिशियल कस्टडी. और जुडिशियल कस्टडी शुरू जब होती है जब प्रोसिक्यूटर यानी जो आपका वकील है वो कोर्ट में जाके सेटिस्फाई कर देता है कि इन्वेस्टिगेशन और कस्टडी, मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए इस फलाने एक्स या वाई जेड इंसान की कस्टडी लेना जरूरी है. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी. ओके. सो प्रवेश, आई हैव अ क्वेश्चन कि जो आपने टाइम पीरियड बताया पुलिस कस्टडी के लिए 15 डेज, वो फिक्स्ड है, वो इससे ज्यादा नहीं हो सकती है? नहीं, वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता. दैट इज द मैक्सिमम लिमिट. ओके, ठीक है. So revamping the criminal justice system to fit the bill. So यहाँ पे we are having few suggestions. So modernizing the law, there are 7 issues which are related to modernizing the jurisprudence. So issues have been mentioned over here. First is whether जो bills अभी आए हैं, the we have been like following the IPC 1860 से, this is the law that we are having. So this is also an initiative when we talk about decolonization. So CRPC hai, IPC, and Indian Evidence Act is there. And right now we have proposed this Bharatiya Nyaya Sanhita bill. 3 bills have been proposed in order to modernize the criminal justice system. So इसमें issues क्या है? पहला तो है whether these bills they exclude the civil law or not. Usually जो criminal laws है, they deals with the issues that are seen as an offense against the broader society and state. जो civil law है, that deals with the loss to a person, मतलब individual level पे हो गया. So this is a minor difference between criminal and the civil law. And CRPC की बात करें तो it includes provisions for maintenance of wife and children after divorce also. So यहाँ पे थोड़ा बहुत intermixing भी देखा जाता है. So this is one thing. So question is whether such matters they should be dealt with under the civil code or not. So new bills they are retaining these provisions. तो ये पहला issue हो गया. Second is whether these bills they create a reformative system rather than a punitive system. मतलब हम reforms पे ज्यादा focus कर रहे हैं या as a penalty measures पे ज्यादा focus किया जा रहा है. So basically there's a move towards this by making community services a form of punishment. So
प्रवेश, यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो कि हाउ कम्युनिटी सर्विस को अगर लाइक प्रेजेंटली वी आर हैविंग सच टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, कम्युनिटी सर्विस एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। या लाइक कम्युनिटी सर्विस ऐसा होता है ना कि लेट सपोज कि किसी बच्चे ने कोई जुवेनाइल जो है अपराध कर दिया है, तो पुलिस यही होता है कि उसके माँ बाप को और जो दूसरी पार्टी होती है सबके माँ बाप को और बीच में उन सोसाइटी उन दोनों फैमिलीज को जानने वाले जो लोग होते हैं उनका बेसिकली एक एफिडेविट पे साइन करवाया जाता है कि हम आपको कम्युनिटी सर्विस के तहत आपके बच्चे को हम छोड़ देते हैं, लेकिन अगर इसके बाद एक भी अगर कंप्लेंट आई तो उसको हम रख लेंगे। इसमें ये कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपको डॉक्यूमेंट मतलब जो भी कम्युनिटी सर्विस होती है उसमें उसका प्रॉपर एक मैकेनिज्म होता है कि जिसमें अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपकी ग्रेजुएट की डिग्री जो है पुलिस के पास रहती है ग्रेजुएशन की कुछ टाइम पीरियड के लिए, जो एक टाइम पीरियड पुलिस वाले देते हैं कि इस टाइम पीरियड में अगर आपका बच्चा कुछ भी करता है तो आपकी डिग्री सील कर दी जाएगी। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म है जो कम्युनिटी सर्विस में काम आते हैं। और दूसरा अभी जो बात हो रही है कम्युनिटी सर्विस में वो बेसिकली ये है कि मीडिएशन पे और आर्बिट्रेशन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। जैसे गांव में होता है कि सरपंच को बुलाकर सरपंच विल हेड द कम्युनिटी सर्विस और वो बीच में ही मतलब सलाह मशवरा करवा के और केस को वहीं रफा दफा करवा देंगे अगर वो दैट इज नॉट सीवर। ठीक है। मेरे माइंड में जो आ रहा है अराउंड दिस की कम्युनिटी सर्विस एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट क्या हो सकता है राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कि प्रिजन्स में ना ऐसी एक्टिविटीज होती रहती है कि आपको इतना टास्क इतना लाइक कंप्लीट करना है, तो दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कम्युनिटी सर्विस जिसको पनिशमेंट की तरह दिया जाता है। तो मतलब आपकी स्किल्स भी इनहेंस हो रही है एंड जो लाइक दैट कैन बी वन ऑफ द आइडियाज बिहाइंड दिस एज हाँ वेल। मतलब आप उनको ये बोल रहे हो ना कि उनका लेबर जो है उसको यूटिलाइज किया जाता है हाँ, एज अ कमर्शियलाइज फॉर्म ऑफ करने के लिए। पनिशमेंट, हाँ। लाइक ओपन प्रिजन्स में भी जो रहता है, द prisoners they move out and they do their service outside the prison, so that can be also taken into this. And the third issue जो है whether maintenance of the public order है जो process of criminal prosecution that should be in the same law or not, तो यहाँ पे मतलब basically clarity होना चाहिए, difference होना चाहिए, separation होना चाहिए, होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, so that again clarity रहे, there is no confusion and ambiguity in the future. Fourth issue is whether various जो directions of the Supreme Court of India है they have been codified in these proposed laws, मतलब कि जो पहले judgments रही हैं Supreme Court की, क्या उन judgments को हमने codify किया है in these laws or not? So the bill they codify the procedure for the mercy petitions. However, there is no codification of various directions which are related to arrest and bails. मतलब कि अगेन यहाँ पे भी एक यूनिफॉर्म अप्रोच हमें नहीं दिख रही है। मतलब अरेस्ट और बेल से रिगार्डिंग जो भी डायरेक्शंस आए हैं पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको हमने कोडिफाई नहीं किया, बट जब हम बात करते हैं मर्सी पिटिशंस की तो दे हैव बीन कोडिफाइड। सो there is this thing and मतलब वही यूनिफॉर्म अप्रोच नहीं है। फिफ्थ इशू इज whether the bills they try to ensure consistency of implementation। ये मतलब हर लेजिस्लेटिव एक्ट में ये सबसे पहले हम बोलते हैं कि उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है is only going to bring real results on the ground. Sixth is whether the age provisions they have been updated for the modern norms or not. So modernity मतलब कि जो modern we can say कि issues आ रहे हैं, जो modern angles highlight होते हैं cases में, whether they are incorporated in these laws or not. So IPC specifies कि child below the age of 7 years cannot be accused of an offense. This is clearly specified. It provides कि जो exemption है until 12 years of age if the child is found not to have attained the ability to understand the nature and consequences of his conduct. सो इसको 12 years तक हम तभी कर सकते हैं, बट अब इस चीज को आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि whether the child has that ability or the nature to understand the consequences of the conduct or not, तो ये बहुत ambiguous चीज है। and apart from this, seventh जो issue है whether gender related offenses they have been updated or not. So gender neutrality is one important aspect when we even talk about the sexual harassment against males. We also do not talk about so much about their mental health at the same time. So bill is in line with the Supreme Court judgment which struck down the offense of adultery. Then section 377 the IPC we decriminalize homosexuality. So in these context the new proposed laws they are in sync with these judgments जब हम modernity की बात कर रहे हैं। तो कुछ aspects हैं या हम जो बात कर रहे हैं gender related जो issues रहे हैं। So Justice Verma Committee 2013 में they had recommended making the marital rape an offense, but this is not being done. So this is a debatable topic as of today as well, whether marital rape is an offense or not. एंड कहीं पे हमें ओवरलैप भी देखने को मिल रहा है विद स्पेशल लॉज।
So like यहाँ पे example है Legal Metrology Act 2009 states की provisions of IPC related to the weights and measures they will not apply. So the bill also removes these provisions. However, the bill, like when you talk about the IPC, it overlaps with several other acts, like in cases related to food adulteration, sale of the adulterated drugs, bonded labor, rash driving, and abortion. It continues to be an offense, though it is permitted under certain conditions under this particular act, Medical Termination of Pregnancy Act 1971. So जो bill है which replaced the CRPC, it retains the provision requiring the maintenance of a parent through a special act was passed in 2007 regarding this. तो थोड़ा बहुत हमें overlap भी देखने को मिल रहा है. And definitions डेफिनेटली हम बात कर चुके हैं. अगर बात करो डेफिनेशन, द मेंटल इलनेस इज द सेम जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में है. सो मतलब यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल वी आर हैविंग different laws. So 3 laws, they had a number of illustrations from daily life to clarify these provisions at the same time, and कुछ illustrations ऐसी भी रही which have become obsolete but they have still been retained. So इसके पीछे again क्या reason है क्यों हमने उनको retain किया, that is there, and these include like people riding the chariots, firing cannons and being carried on the palanquins. So मतलब इसका रेलेवेंस आज के टाइम में हमें देखना पड़ेगा. So these bills, they will become the basis of the criminal justice system in future. Parliament should examine them with great care so that they create a fair, just and efficient criminal justice system. So that is what we aspire for. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, इन तीनों को लाने से जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है उसके ऊपर बहुत जल्दी से काम होगा. वो पेंडेंसी घट जाएगी काफी हद तक. उसका कैसे क्या कारण है? प्रवेश? अच्छा, आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं. मैं यही पूछ रहा था, फिर मैं बताऊंगा. ठीक है. प्रवेश, इसमें पेंडेंसी कैसे घटेगा? बात है कि रैशनलाइजेशन ऑफ द रैशनलाइजेशन ऑफ द आईपीसी है ओवरऑल, क्योंकि जो बहुत सारे पुराने हो गए आईपीसी का स्कीम है सब, उसमें हटाया जाएगा वो सबको. और दूसरा है कि डीकॉलोनाइजेशन के तरफ में जा रहा है. नहीं, हम मैं लोग बताता हूँ. हाँ आर्बिट्रेशन को फोकस कर रहे हैं या फिर कम्युनिटी सर्विस को फोकस कर रहे हैं, तो जजमेंट सिर्फ और सिर्फ जेल के तरफ नहीं रहेगा आपका, बाकी सब लाइटर मेथड्स भी है मैं यहाँ पनिशमेंट पे का. बस सिंपली आई ये थिंक वहाँ बोलूंगी, मैं बस ये बोलूंगी यहाँ पे कि क्यों घट सकते हैं, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट जो हो सकता है. मतलब आईपीसी सीआरपीसी 1860 70s के टाइम के, तो जो नेचर ऑफ क्राइम्स होता था वो उसके कोऑर्डिनेशन में था. बट जो मॉडर्न हम बोले मॉडर्न क्राइम्स हो रहे हैं या फिर फाइनेंस से रिलेटेड क्राइम्स हो रहे हैं, ऑनलाइन क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ हो रहा है, मतलब आई एम जस्ट हाईलाइटिंग कि जो मॉडर्न एलिमेंट है एंड जो न्यू प्रपोज लॉ है वो they can be in sync. तो उसकी वजह से we can expect the pendency of cases to come down. और प्रवेश, आप कुछ और स्पेसिफिक बता सकते हो तो you can go ahead. Yes. So I appreciate both of your efforts in this regard. But the main thing which I wanted to highlight is currently what happens that there is a lot of burden of these three texts on the judge's heads. सीआरपीसी में क्रिमिनल प्रोसीजर लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्या चार्जेस लगेंगे वो आईपीसी में लिखे हैं, उसके ऊपर क्या एविडेंस लगेगा वो इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा है. So basically that puts a lot of burden to study and to read, and that leads to adjournment process in the judiciary system. So when we will have a proper one text in which crime will be there, procedure will be there, and the evidence will be there, so it will leads to less time less time consumption in giving a judgment, and it will reduce the adjournment process also. So that is why it will reduce the time and pendency. Okay. So around we talk about ragging. So unending ordeals. Law enforcement officials and colleges, they must do more to prevent ragging. So प्रवेश, औशक, आप पे आंसर कर सकते हो कि और क्या किया जाना चाहिए so as to prevent ragging. And जो current provisions है आप उनके बारे में भी discuss कर सकते हो कि क्या right now provisions what do we have. तो उसी का आप बताइए, सर मैं बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल जो रैगिंग का इंसिडेंस है वो कम होते जा रहे हैं. ऐसा नहीं कि
आज भी ज़्यादा ही होता है रैगिंग। लेकिन उसको स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने के लिए क्या किया गया कि फर्स्ट ईयर में जो इंटरेक्शन है फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर का, उसको बेसिकली नाइट के पहले किया गया। आप मिल सकते हो बिफोर बिफोर नाइट, वैसा होना चाहिए। सेकेंड वुड बी द अनोनिमस कंप्लेंट बॉक्स, ये भी किया गया था खड़गपुर के अंदर में भी। तो आई थिंक ये दो एरियाज है। अ, बाकी प्रवेश ऐड करें, बाकी किसी को और बोलना है? बोलो। ठीक है, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ शायद 2009 के अंदर कोई एक्ट आया था, प्रोहिबिशन ओवर रैगिंग एक्ट, सेंट्रल लेवल पे, जो जिसके अंडर जो है प्रोविजन है जो रैगिंग को बैन करते हैं, और रैगिंग अगर होती है तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाते हैं विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ द कॉलेज एंड देन टू द हायर अथॉरिटीज। तो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए उसका। और वो कैसे होगा, जब आप उसकी अवेयरनेस बढ़ाएंगे, तो आप बेसिकली उसका शोकेस कर सकते हैं उस एक्ट का ऑन दी प्रोमिनेंट प्लेसेस विद इन द कैंपसेस, ताकि लोगों को ये पता लग सके कि अगर रैगिंग होती है तो उसके खिलाफ हम कुछ ले भी सकते हैं, रेमेडी भी अवेलेबल है। तो अभी लोगों को पता नहीं होता, इस वजह से वो चुपचाप होके सहते हैं ये चीजें। दूसरा ये है कि ग्रीवियंस की जहाँ तक बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी भी कैंपसेस के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, जिसके अंदर जो कॉलेज के प्रेसिडेंट होते हैं वो भी हो, जो इम्पोर्टेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं कॉलेज के वो भी हो, और मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स भी हो, ताकि जो बात है वो नीचे तक ना दबे और ओवरऑल उसमें एक सर्वसहमति से टाइमली एक्शन लिया जाए। तो ये दो स्टेप मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो मतलब फैक्चुअल डिटेल ज्यादा मेंशन्ड है इस आर्टिकल में। फर्स्टली तो एक इंसिडेंट हुआ है इन वेस्ट बंगाल अमंगस्ट तमिलनाडु। ये दो पहली स्टेट्स थी इंडिया में जिन्होंने सबसे पहले मतलब रैगिंग को बैन किया था। बट वहीं से ऐसे इंसिडेंट्स हाईलाइट हो रहे हैं कि स्टूडेंट्स हैव बीन लेफ्ट ब्रूटलाइज्ड फिजिकली भी और मेंटली भी। मतलब ये सिर्फ पहले वी यूज टू टॉक अबाउट कि मेंटली टॉर्चर किया जाता है, बट फिजिकली भी ब्रूटलाइज तरीके से things have been come to the forefront. So यहाँ पे we think कि मतलब बहुत सारी committees के name mentioned है। Firstly तो R.K. Raghavan committee is there which was constituted by Supreme Court. So उन्होंने कुछ पहले causes identify किए and they suggested और क्या हम remedies कर सकते हैं। तो they had their report in 2007. but यहाँ पे again मतलब इतना ज़्यादा in detail में उनकी recommendations mention नहीं है। उन्होंने ये जो ragging है they used the phrase psychopathic behavior and a reflection of deviant personalities. So this is one thing जो हम mentioned है। University Grants Commission ने भी एक कमेटी बनाई थी on prohibition, prevention and punishment. Then we also had the Raghavan committee similarly on this subject. So UGC Regulations Act भी है regulating this act of menace of ragging in the higher educational institutions 2009. So एक ये aspect भी है सिर्फ higher education में क्यों, school level पे भी तो bullying होती है, that is also a form of ragging. तो क्या उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा act नहीं है? देन अपार्ट फ्रॉम दिस जो इसकी प्रोविजंस है इस एक्ट के अंडर वी टॉक अबाउट कि कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज हैं जो लाइक फ्रेशर्स कंडक्ट करते हैं, फ्रेशर्स पार्टीज होती हैं। एंड देन जब आप अगेन एडमिशन भी लेते हो, लाइक इफ यू आर टेकिंग एडमिशन इन ड्यू, तो पर्टिकुलरली आपको एक अंडरटेकिंग स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को साइन करनी होती है ऑन हु आर बेसिकली इंडल्जिंग इन रैगिंग एंड पुटिंग अप नो रैगिंग नोटिस कॉलेजेस में भी मतलब होते हैं। सो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे वी मस्ट क्रिएट इनकरेजिंग एटमॉस्फेयर जहाँ पे टीचर्स, हॉस्टल वार्डन्स एंड नॉट पेरेंट्स लिविंग अ डिस्टेंट प्लेस दे आर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द विक्टिम्स। सो मतलब बिहेवियरली यहाँ पे ज्यादा एस्पेक्ट है एंड रिपोर्टिंग के अराउंड तो आप लोग मेंशन कर चुके हो और क्या हो सकता है। So this reflects our academic standards also, and governments too must be earnest in implementing the regulations, failing which campuses they would not be safe for the students. So stubble burning, we have already taken up this in lot of detail. क्या problems है, क्या solutions हो सकते हैं, and क्या हम actually कर रहे हैं। So Border Roads Organization says Amarnath Road project जो है it will help the pilgrims movement and obviously the movement of the essential commodities also. So facing outcry from Jammu and Kashmir based political parties, BRO ने
क्लैरिफाई किया है कि जो अगेन रोड कंस्ट्रक्शन है बॉर्डर एरियाज में and specifically जो चार धाम यात्रा है there also it would be helping in easy movement of the pilgrims at the same time. So कोर्ट ने भी 2012 में they issued the directions for the sufficient widening of the tracks to facilitate pedestrian traffic and address the congestion on tracks. So obviously इसकी वजह से traffic problems भी देखी गई हैं. But again widening of the roads के मतलब widening of the roads करने के बाद environment पे जो impact आएगा हम उसको कैसे फैक्टर इन करने वाले हैं. So that needs to be looked into. यहाँ पे लिखा हुआ है keeping in view the environmental concerns, but again widening of the roads की वजह से definitely जो stability है of the surrounding soil उसके ऊपर negative impact होगा. So we have talked about कि we can plant more trees along that particular width of the road so that landslides को थोड़ा वो prevent करने में help करें. And vibrant village program is there specifically. जब हम बात करते हैं बॉर्डर विलेज डेवलपमेंट में टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से वी आर आल्सो फोकसिंग ऑन सेल्फ सस्टेनेबल एनर्जी बिल्डिंग्स. So this is there, and obviously from the perspective of when you talk about disasters also specifically earthquakes, landslides, hilly regions में. So COP28 summit would be there in Dubai. एंड यहाँ पे डेफिनेटली जो हमारे टारगेट्स हैं एक तो क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से वही फैक्चुअल चीज है. वी नीड टू रिमेम्बर दैट एट द सेम टाइम. एंड क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग प्रवेश और नौशिक आप लोग मतलब बता सकते हो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग. मेजर चैलेंजेस क्या हैं? So first would be rehabilitation, resettlement after the disasters, particularly in the coastal areas, क्योंकि वहाँ पर sea level rise करने के कारण submergence of the land हो रहा है. Second would be erratic rainfall, urban heat island effect. ये हो सकता है मेजर चैलेंज. फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट कर सकता है. हाँ, और क्लाइमेट फाइनेंस भी सबसे बड़ा चैलेंज है. कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में वहाँ मतलब डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में या नॉर्थ या ग्लोबल साउथ के बीच में डिफरेंसेस देख रहे हैं. मतलब वी आर हैविंग दीज मीटिंग्स बट इनका जो आउटकम्स है वो हमें इतना हेल्प नहीं कर रहे हैं ना. इंडिविजुअल लेवल पे जो कंट्रीज हैं लाइक एनडीसीज टारगेट्स हैं वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं बट ग्लोबली जो कोऑपरेशन होना चाहिए दैट इज लाइक वी आर स्टिल लैकिंग ऑन दैट व्हाट आई फील. एंड इम्पैक्ट तो आपने बोल ही दिया औशिक. प्रवेश आपको कुछ यहाँ हाईलाइट करना है? नहीं, इसमें मुझे कुछ नहीं हाईलाइट करना, लेकिन ओशित ने आई थिंक पिछली बार मुझसे पूछा था कि किस केमिकल्स को यूज करोगे ताकि लैंडस्लाइड रुके. यस. So basically, there are some chemicals like sodium and other which have been recommended by the government to be used in injection with Portland cement on the more landslide prone area. So that work is currently going on. ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन के पर्सपेक्टिव से आप बोल रहे हो कि मतलब वो और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा तो Yes, हाँ मतलब. ठीक है. So we are having this Broadcasting Services Bill 2023. It aims to bring in a new regulatory framework in keeping with the technological advancements in the sector. So this is also in the context of modernizing these bills and the rules and provisions of it. Around OTT, we are seeing the dynamic world of OTT, how it has grown specifically after 2020 during the COVID-19, digital media, then DTH, direct to home services, they're promoting technological advancement, the service. So we've also talked about in this context in relation to, the revenue sharing kaisa hona chahiye with the telecom companies and regulation of OTT platforms. Right now, they are self-regulatory bodies. And जो content आता है, we have also talked about कि the way the films they are certified. तो क्या वो similar provision हो सकता है for the OTTs or not?
and तो data. मानसी, इसका बिल का मैं थोड़ा बता देता हूँ ओवरव्यू। तो बेसिकली इस बिल का क्या है कि एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क ये बनाएगा पूरे ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्रीज के लिए। दूसरा, इवैल्यूएशन कमेटी रहेगी। एडवर्टीजमेंट कोड जो होता है और प्रोग्राम कोड दोनों के लिए इवैल्यूएशन होगा उनका। तीसरा, एडवाइजरी काउंसिल का गठन होगा जो इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी की तरह काम करेगी और ग्रीवियंस रिडर्सल भी देखेगी। पेनल्टी के स्ट्रक्चर होंगे जो फाइनेंशियल कैपेसिटी से लिंक्ड होंगे। कोई सा चैनल, जो सा चैनल के जितना पैसा उसके हिसाब से उस पर पेनल्टी लगेगी। उसके बाद एक्सेसिबिलिटीज होगी ऐसे लोगों की मीडिया में जो डिसेबल्स हैं, जो कि करंटली अभी इतना नहीं देखा जाता है। और मॉडर्नाइजेशन, जो आपने ओटीटी की बात करी तो उसका किया जाएगा। और सेल्फ रेगुलेटेड रेजीम्स, जितने भी ब्रॉडकास्ट जो कंटेंट देते हैं उनको सेल्फ रेगुलेशन करने का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन उसमें दो प्रोविजन है कि एक तो कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी होगी जिसमें सरकार के और ब्रॉडकास्ट एजेंसीज के लोग होंगे, और दूसरा ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल होगी। तो बेसिकली इट विल गो एज एन अपील सिस्टम। उसके बाद स्टैट्यूटरी पेनल्टीज और फाइन्स होंगी, और राइट टू वे भी होगा इसमें, मतलब किस तरीके से आप कर सकते हैं। और इट विल लीड टू ट्रांसपेरेंसी एंड फ्यूचर रेडी broadcasting in the country. So these are few information regarding that. Okay, thank you, Pravesh. यहाँ पे we see tremors, they reveal gaps in the emergency alert system. So again, this is specific to the earthquake, and recently we saw an earthquake of 6.4 magnitude from Nepal. The focus was in Nepal, and National Disaster Management Authority cell broadcast this alert system. So we have the cell broadcast alert system under the NDMA. So they have been tested in recent weeks to send out mass alerts when this natural disaster strikes, but it did not do so. So iski functioning mein we are having some bottlenecks. So Google also did not send out the alerts in the national capital, even though tremors, they were felt in both the instances in India also. Then we have one more alert system, which is called the Android Earthquake Early Warning System, supplements the government's efforts on earthquakes alert and aims to protect. तो basically जो हमारे मोबाइल फोन डिवाइसेस हैं उनमें ये सिस्टम it is there, but it is not functioning as of now. So modified Mercalli intensity scale, earthquake की intensity को measure करने के लिए we have this Mercalli scale, and then we have Richter scale apart from this. तो ये specific intensity measure करने के लिए है और वो magnitude के लिए है. So we'll be continuing in part 2 of the video. You can join us there.